Hello बच्चों, let's have a look at this question which says the pH of a 10 raised to the power 10 molar NaOH solution is nearest to. Options are 10, 7, 4 और -10. Okay, तो हमें solution provided है NaOH का जिसके concentration क्या है 10 raised to the power -10 molar. हमें इस solution का pH find out करना है. So the key concept here is pH of solution. तो pH क्या होता है? pH expresses the concentration of hydrogen ion in a solution, जो कि हमें नेचर बताता है whether the solution is basic, acidic or neutral in nature. हमें फाइंड आउट करना है pH 10 raised to the power 10 molar NaOH का. ठीक है, तो NaOH it will dissociate into Na plus and OH negative, right? Concentration या molarity हमें given है. Molarity of NaOH is given as 10 raised to the power -10. तो अगर NaOH की molarity 10 raised to the power -10 molars है, that means hydroxide ion का concentration भी क्या हो गया 10 raised to the power -10 molars. But this solution is very dilute, right? ये molarity अगर हम देखें 10 raised to the power -10, it depicts के solution बहुत ज़्यादा dilute है. Therefore, when the solution is very dilute, that means कि उसमें OH ion का concentration from this NaOH बहुत ज़्यादा कम होगा as compared to the solvent which is water. तो water में जो OH का concentration होगा that will be greater than the concentration of OH from this base which is NaOH. Okay, then the concentration of OH negative ions from water cannot be neglected. Okay, because उनका amount बहुत ज़्यादा होगा as compared to this NaOH के हाइड्रोक्साइड आयंस के कंपैरिजन में, तो उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते. Therefore, जो टोटल OH और हाइड्रोक्साइड आयन का concentration होगा that will be the concentration of hydroxide ions from water molecules plus concentration of hydroxide ions from NaOH. तो वाटर के लिए हमें पता है इन केस ऑफ वाटर, फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इट विल बी 10 raised to the power -7. ओके, बिकॉज Kw या आयन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? इट इज 10 raised to the power -14, जो कि प्रोडक्ट होता है HNOH का. तो OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर के केस में 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 raised to the power -7 है. तो ये वैल्यूज इंसर्ट करें. 10 raised to the power -7 प्लस 10 raised to the power -10 जो क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है. तो इससे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 1.001 into 10 raised to the power -7 molars. So this is the total hydroxide concentration present in this solution. Okay, तो अब इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं POH. Okay, the POH is equal to minus log of OH ions का concentration equals to minus log of 1.001 into 10 raised to the power -7, which gives us the value 6.99. Okay, तो POH हमें क्या मिल गया?
6.99. अब इससे we can calculate the pH of the solution. We know that pH and pOH are related by the equation pH equals to 14 minus pOH. So it will be 14 minus 6.99 equals to 7.01. So we can say that pH of a 10 raised to the power 10 molar NaOH solution is nearest to option number B, 7. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.